Good evening. I'm good, thank you. How are you? All good, sir. All good. Great, great, When great. are we Awesome. planning to start, sir? We can start now. So, yeah, we can start. This is a Q&A session, so there's nothing that I have planned to explain or anything. I'm happy to take questions. So, you can raise hands and we can go one by one. Any questions, any doubts, any questions? Anji, go on. Just deep. Sir, good evening. Sir, just Good evening. wanted to ask, ये जो हमारा plan है, इसमें wanted to understand first of all about if as a seller, I want to understand certain things. How do I interpret those markers? Number one. And once we are through with this, then I have one or two questions on the algo. Yeah, no problem. So, okay, first is there. This essentially represents buy pressure and sell pressure. Okay. As a seller, there are few things. If you ask me as a seller, there are few things that I personally would rely on more than the markers. I can use markers also, and I can then combine that with the trend line. Make sure that they both are in line. Then I'll probably go ahead with my positions, right? Call, sell, put, sell, whatever it is. Same here. They are in line. Position is starting off, and I'll be able to probably go on with that. More than that, my the first place where I would start with as a option seller, again using volume candles itself, I would look at 25 700 and 750. So I'll take 25 700 itself. Given that price is going, it is going up to 750 at about 10 955. I would look at what's happening in terms of I'm trying to look at call, sell, put, sell. At about 955, I see that this is actually making higher highs. Put is actually making quite higher highs, right? So I'm convinced that I would be as a seller, I want to be on the put side. That is first thing. Then let me also verify what's happening on the call side. Call is already making lower lows. So this is more than enough confirmation for me to say, okay, at least at 943, I have enough confirmation to say that if I want to be a seller, I want to be a put seller more than a call seller. I've Mm-hmm. got my confirmation, right? If I want to Okay. be a buyer, this is the time I've got my clarification that I can be a call buyer. I can be a call buyer instead of a put buyer. Okay. So those are the two things that gives me first and foremost, those are the two things that give me a lot of clarity. Second thing, what I do is I'd also look at strike sellers. Now the direction is critical. I'm taking today's date only so that I can look at time. So Mm-hmm. direction is critical because as a seller, right, all I care about is direction. Because if I know the direction, I don't mind one or two candles going here and there. So at about the same 940-ish, right? Now Right. it is going down, but this is trying to go up at 943 from the bottom. Looks like there is a pressure 940. Let me go up to 943, 944, 945. Now, well, this is slowed down. Both from the bottom, there is a buy pressure. There is a buy pressure here, and both are turning upwards. And the sell pressure is slowing down. It's not like the sell pressure here, where it is looking down steep. The sell pressure is Uh, more or less becoming flat. okay. Now, this gives me confidence that there is an upward momentum possible, definitely possible from here onwards. Mm-hmm. So one, I need a direction. Two, I will also need the volume candles. Those are the two things that gives me a lot of confidence from a selling point of view. Because nothing works like direction in this chart. ATM, ATM plus one, ATM minus one. Only those three strikes, if they can tell me that direction has more or less changed. These could be a little slow, by the way, because if the price had fallen and then if it is coming, if the volume has fallen and if it is coming back up, it will take a little time to become blue, right? But Mm-hmm. doesn't even here also at 943, it has turned, essentially it has turned blue. 943.44, I know that, okay, I can be on the upper side. That means that essentially price is looking to go up. Right. That is what I would look at. Now the same thing, let's look at when the market has turned, right? So let's Mm-hmm. say somewhere about 11 o'clock, 11, 11, 11, 12. So I think till about 10:30, it will all be looking up.
clearly you have no reason to get out. It is still looking up. Let's say at 11 o'clock. This is the easiest way for a seller. At 11 o'clock, now I have a little bit of a concern because this is now from the top, the sell pressure has started. Right. They are not in sync. They are not all in sync, right? From the bottom, the pressure is also going like looking sideways, but the sell pressure has started. So I'll be careful, right? I'd look at 11:10. At 11:10 now, I am inclined towards going down. Okay. Because this is looking sideways. This is no more looking like it is. It is not looking like, let's say, it is not looking at 1 o'clock or 2 o'clock. Let's say between 1 and 2. It is now looking most likely between 3 p.m. It is looking towards 3 p.m. Let's say. Right. So now this is slightly looking below 3 p.m. The pressure is still not too great from here, but it is essentially going towards that. So there is sell pressure increasing. This has turned. So I think my chances of 10, 11, 15, if I look at my chances of trusting the downward momentum, I think it has already moved one strike, is better than now. And again, at the same time, I'll try to look at what's happening at the volume candles. So that gives me a lot of confidence. Okay. You understand? So look at the direction. Direction is critical. Along with the direction, if you are looking at volume candles, दोनों जरूरी है, दोनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये डायरेक्शन अगर ये दोनों मतलब एटीएम के ऊपर और एटीएम दोनों के दोनों रेड है और नीचे से बाई प्रेशर ज्यादा नहीं है, सेल प्रेशर ज्यादा लग रहा है, बाई प्रेशर सेल प्रेशर दोनों में ज्यादा लग रहा है, बाई प्रेशर मोर और लेस फ्लैट है, तो क्या हो सकता है? हो सकता है कि मार्केट ऊपर तो नहीं जाएगा, या तो साइडवेज रहेगा या फिर नीचे ही जाएगा, ऊपर तो नहीं जाने वाला. देन यू नो व्हाट स्प्रेड्स यू हैव टू एग्जीक्यूट. अंडरस्टैंड? बिकम्स वेरी इजी टू रीड. डायरेक्शन पता करना बहुत आसान हो जाता है यहाँ से. Okay. As a seller, I think this makes more sense. Yeah. Right. Okay. So I think that answers your first question. What is the other question? So second question is regarding algos. So when are we putting those algos on live? यार the problem is regulatory restrictions इतने ज्यादा हैं कि हम लोग genuinely speaking हम लोग confused है. The update from the team is that we are genuinely confused as to how do we take it. हम लोग इसको कैसे रिलीज करें, ये सोच के हम लोग परेशान हो गए हैं. कुछ चैलेंजेस है रेगुलेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट वी विल हैव टू, हम लोगों को एनएससी के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, जो कि हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं, तो उसमें शायद टाइम लग जाएगा. और सेकंड एनएससी से करने के बाद में हम लोगों को ब्रोकर के साथ में एक और रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एनएससी के साथ में, सिर्फ निफ्टी के लिए. अगर हम लोग सेंसेक्स के लिए जाते हैं तो फिर बीएससी के साथ में एक अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. एंड देन देयर इज अदर चैलेंज कि ये लोग ऑल्गोस को मार्केट ऑर्डर्स प्लेस करने नहीं देते हैं, विच इज अगेन अनदर चैलेंज एज टू हाउ डू वी नेविगेट. हाँ, फिर क्या करने देते हैं ये? ओनली लिमिट ऑर्डर्स यू विल हैव टू प्लेस. मार्केट ऑर्डर्स प्लेस नहीं करने देते हैं बिकॉज हुआ क्या है कि कुछ लोगों ने कुछ आल्गोस ने हजारों ऐसे ऑर्डर्स बाय मिस्टेक डाल दिए हैं, जिसकी वजह से मार्केट में अचानक से 20 रुपए का असेट 500 रुपए हो गया है. ऐसा बहुत बार हुआ है. तो वो फ्रीक इंसिडेंट्स को कवर करने के लिए उन्होंने कहा है कि कोई मार्केट ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है. अगर मार्केट ऑर्डर्स नहीं कर सकते हैं तो देन इट प्रेजेंट्स अ डिफरेंट चैलेंज कोई भी आल्गो के लिए. तो ये सब हमें नहीं पता था, जेन्युइनली हम लोगों को पता नहीं था. हमें लगा कि एंड मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे आल्गो प्लेटफॉर्म्स इन सारी चीजों को go on mute please, Bharat. I'm muting you. You can unmute when, if you want to ask questions. So मुझे नहीं लगता है कि कई सारे आल्गो प्लेटफॉर्म्स इसके साथ में अभी अलाइंड है. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे ही काम कर रहे हैं मुझे लगता है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग जितने भी कंप्लायंसेस हैं उसके अगेंस्ट कुछ करें. वी आर अ स्मॉल कंपनी, वी डोंट वांट टू रियली टेक चांसेस. तो हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कैसे इसको प्रेजेंट किया जाए, किस तरह से हम इसे मार्केट में लेके आ सकते हैं. और जो भी आल्गोस यहाँ पे देख रहे हैं उससे कहीं बेहतर आल्गोस ये सारे इंप्रूव हो चुके हैं. ये हमने अभी यहाँ पर 8 है, अभी हमारे पास सेंसेक्स के भी आल्गोस हैं. इनफैक्ट जो रिसर्च टीम है वो इतना अच्छा काम कर रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को मार्केट में लेके आने में बहुत प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज ऑफ. हाँ,
तो सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि आप ये जो अपने एल्गोस जहाँ पे ट्राई कर रहे हो, तो can't you let us know which place platform are you trying so that we can at least see on those platform के how the algos are performing? कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये algos सारे हमारे खुद के प्लेटफॉर्म पे ही काम कर रहे हैं, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है। अभी अभी जो आपका एल्गो है, से फॉर एग्जांपल टुडे यू से कि आई हैव क्रिएटेड एल्गो which will buy call at this rate and ultimately either square off the call at this rate or sell it at a rate which is say 500 rupees more than the price. हम्म, तो आप इसको कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट तो करते होगे ना सर, तभी तो आपने इसको बैक टेस्ट करके उसके ऊपर अपने वेबसाइट पे डाला है। करेक्ट। आई एम श्योर आपने वो एक क्या कहते हैं एक्सपेंस और सॉरी फंड डाला होगा किसी उस पे करेक्ट अपनी अपनी स्ट्रेटजी को चेक करने के लिए। करेक्ट, लाइव टेस्टिंग के लिए। तो अगर वो है कोई प्लेटफॉर्म तो आप हमसे डायरेक्ट चार्ज ले लो और यू लेट अस नो कि यार दिस इज द स्ट्रेटजी व्हिच यू कैन फॉलो। उसमें फिर तो एनएससी बीएससी का नहीं, मतलब समझा नहीं मैं, कैसे कह रहे हो आप? हेलो? हेलो आई सेड हाँ, कैन यू हियर मी सर? आई कैन हियर I यू नाउ, said, यस। for example, you create a algo which is into either buying or selling. ठीक है। Number one, right? And you have tested that strategy over, say, India Bulls for 1 year, ओके। right, sir? Now you tell me, Jasdeep, do one thing. This strategy name is XYZ, and you can subscribe to this strategy. They will give me an access to this how many lots you are trading or whatever XYZ you are trading, and क्या कहते हैं, based on 5 lots you are supposed to give me this much money every month. तो मैं तो उसी प्लेटफॉर्म पे जाके जो उसका ब्रोकरेज है वो उसको पे करूंगा, आपको आपका डायरेक्ट पैसा दे दूंगा, बीच में हमारे को इतना कुछ के अंदर घुसने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या होता है ना जसदीप भाई, सर सेबी के रेगुलेशंस हैं कि अगर आप मैन्युअली ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहे हो, जब तक आप खुद बटन नहीं प्रेस कर रहे हो ना, उन सबको हाँ जी आल्गो सर, कैटेगरी, उन सबको आल्गो घोषित किया जाता है। जब तक आप मैन्युअली कोई बटन प्रेस करके ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहे हो, उन सबको आल्गो सर बटन बोला जाता है। ठीक है, एक वो आल्गो के अंडर ही आता है, पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि आल्गो कहाँ से ओरिजिनेट करता है वो इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मान लो कि हमारे सिस्टम से सिग्नल जा रहे हैं कि यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है, जो कि हमने बिल्ड किया, ये हमारा ही तो सिस्टम है ना। तो हाँ जी हाँ जी हाँ अगर जी सर, हमारे सिस्टम से ओरिजिनेट कर रहा है तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाती है, वी बिकम द आल्गो प्रोवाइडर। ओके अगर हम आल्गो प्रोवाइडर हैं तो हमें एनएससी के साथ में रजिस्टर करना कंपलसरी है। वी हैव टू मैंडेटरीली रजिस्टर विद एनएससी एंड वी हैव टू बिकम एन आल्गो प्रोवाइडर एंड देन वी विल हैव टू वर्क थ्रू अ ब्रोकर। सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम नहीं है। मान लो मैं जीरोधा के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। अगर हम लोग जीरोधा करेक्ट के साथ में काम कर रहे हैं तो हमारे हर एक ऑल्गो के लिए एक आईडी मिलेगा, उस आईडी के साथ में ही ऑर्डर प्लेस होगा। तो ये सारे बहुत सारे एक सिस्टम बना हुआ है जिसके थ्रू ही हम काम कर सकते हैं। ओके इसके इसको बाईपास नहीं कर सकते हैं बिकॉज दीज आर रेगुलेशंस, राइट? एंड ऑफ द डे दिस इज लॉ ऑफ द लैंड। तो हमें इसके साथ ही चलना पड़ेगा और इसके साथ ही देखना पड़ेगा कि हम लोग किस तरह से इसके दायरे में रहकर काम कर सकते हैं। ओके। ये जो जो अभी एग्जिस्टिंग एल्गोस चल रहे हैं सर, तो इनमें दो तरह के एल्गोस हैं। एक तो हु आर चार्जिंग अस मनी एंड सम एल्गोस आर फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक many companies are giving algos free of cost, हाँ, like ICICI or India Bulls or many other. करेक्ट करेक्ट। तो तो वो और इवन वो ओसवाल, कौन सा, मोतीलाल ओसवाल, करेक्ट। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो उनका अगर पेड वाला वर्जन है कोई, तो उसमें आपको उनका जो भी कोडर होगा या जो भी होगा उसको डायरेक्ट पे करते हैं वो लोग, और एक हाँ, तो मतलब नॉन पे पेमेंट स्ट्रैटेजी ऑप्शन होता डेवलपर है को उनका।
स्ट्रेटेजी डेवलपर को हाँ जी। डायरेक्टली पे करते हैं, मुझे भी पता है, ट्रेडट्रॉन है या फिर आईसीआईसीआई है या फिर मोतीलाल ओसवाल है, जो भी है, ये सारे जो भी लोग कर रहे हैं, जब ब्रोकर करते हैं ना, तो ब्रोकर के लिए सर बहुत सर सारे, जब ब्रोकर के लिए बहुत ज्यादा फायदे हैं, बिकॉज ब्रोकर को डायरेक्टली एनएससी के साथ में, बीएससी के साथ में वो अलाइन कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। 2, हम लोग ब्रोकर के हम लोग अच्छा ब्रोकर ब्रोकर के दुनिया के अंदर हम लोग होस्ट नहीं कर सकते हैं, फिर तो हमारा आईपी चला जाएगा, समझ रहे हो ना आप। अब ये अच्छा ब्लैक अच्छा अच्छा बॉक्स अच्छा। है, एट द मोमेंट ये सब ब्लैक बॉक्स है, आपको ये नहीं पता है कि ये ट्रेड किस समझ गया बेसिस पे समझ ले रहा है। गया। हाँ वो फिर पूरा एल्गोरिथम का कोड कोड चले जाएगा ना उनके पास। करेक्ट, हम लोग उनके अंदर, मतलब हम लोग ब्रोकर को ही आल्गोस नहीं दे सकते हैं, हम लोगों को एक आल्गो प्रोवाइडर बन के ही काम करना पड़ेगा। अब उसका प्रॉब्लम ये है कि हमें ठीक। आल्गो प्रोवाइडर बन के काम करते हैं, तो भी अगेन देर आर बहुत सारे क्लॉजेस है, मैं जिसके अंदर जाना नहीं चाहता एट दिस मोमेंट, but we are working it out. हम्म। Jasdeep bhai, we genuinely, sincerely want to release these algos at the earliest. बट मुझे नहीं पता, मैं बोल रहा हूँ आपको, ये इक्विटी कर्व इससे कहीं बेहतर इक्विटी कर्व है अभी जो हमारे पास algos है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफैक्ट हम लोग बायर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। नाउ वी हैव सो मेनी algos फ्रॉम सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड दे आर एक्सलेंट इक्विटी कर्व। इक्विटी कर्व इतना अच्छा है सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के लिए। अनफॉर्चुनेटली हम्म। पता नहीं हम लोग कब रिलीज कर पाएंगे, बट लेट्स सी। मैं एटलीस्ट वो आल्गोस को, टीम्स को कहता हूँ कि प्लेटफॉर्म पे एटलीस्ट आल्गोस को डाल दें, एटलीस्ट आप लोग देख सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है जब तक हम लोग रिलीज नहीं कर पाएंगे। हम लोग जितना भी हम्म। आल्गोस आपको दिखाएंगे कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम लोग अपडेट भी नहीं कर रहे हैं ये आल्गोस को। ओके। बट लेट्स तो सी, हम लोग बाय देखेंगे एनी कैसे एनी जाता है। चांस, बाय एनी बॉलपार्क डेट्स जब तक आप फेब्रुवरी, सोचते हैं कि फेब्रुवरी। जाएगा? मुझे नहीं लगता कि जनवरी में कुछ भी हो पाएगा, फेब्रुवरी में शायद कुछ हो पाएगा। फरवरी बिगनिंग और मिड मिड और एंड? मिड ऑफ फेब्रुवरी। ओके ओके। But again, that all depends on how quickly we will get the approval. From once we register with NSE, how quickly we get the approval, etc., etc. बहुत सारी चीजें हैं। एनी बॉलपार्क कॉस्ट यू हैव इन माइंड? Not at this अभी moment. तक कुछ वर्किंग, कुछ कोई कुछ तो मतलब, बॉलपार्क होगा। जसदीप भाई मैं कहता हूँ आपको कि इतना आप समझ लो कि हम लोग दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स उस तरह से तो नहीं रहेंगे। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि 50% या 40%, 50% हमको मार्जिन चाहिए एक्सेट्रा। इट ऑल बी सब्सक्रिप्शन बेस्ड। ओके, मंथली अभी जो आपका प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है उसी तरह से होगा। दैट इज व्हाट आई नो द थिंकिंग इज, कि मंथली हम्म। सब्सक्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। एंड आई थिंक इट विल बी मच मोर कॉस्ट एफिशिएंट देन द अदर प्लेटफॉर्म्स आउट देयर। हाँ बस वही है बट ना, दैट्स व्हाट वी लुक एट। एनी पर्सन हु इज subscribing, if it is cost efficient, everybody is a happy man. करेक्ट, एंड ऑफ We द डे वी also वांट टू इंश्योर, really happy. yeah, we want to ensure that the idea is not to make a lot of money. The idea is to prove, because for a Yeah, yeah. company, right, हम लोगों के लिए ट्रांजैक्शनल इनकम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। दैट्स व्हाट द थिंकिंग इज राइट नाउ। द आइडिया इज टू बी एबल टू प्रूव इट एट स्केल। दैट्स व्हाट इज मोर पावरफुल देन the revenue itself. So, like I said again, we will have to just wait and see. To interrupt, sorry to interrupt, Thank you. एक्चुअली आल्गो का Thank चार्जेस you. से ज्यादा आल्गो का क्वालिटी पे हम लोग का इंटरेस्ट है। Who is that? Can you repeat the question? सर एक्चुअली हम लोग आल्गो का चार्जेस से ज्यादा आल्गो का क्वालिटी के ऊपर हमारे ज्यादा इंटरेस्ट है। Vishwas, yeah, correct. I completely agree. I second your thoughts. If I am subscribing, अगर मैं किसी algo को सब्सक्राइब भी करूंगा ना, तो मेरे लिए ये कर्व, ये नेट कर्व जो है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस नेट कर्व बेटर देन दिस, नेट कर्व शुड बी बेटर देन दिस फॉर श्योर। तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। Yeah, even better than this if possible, but this is also still fine. This is buyer and has got extremely crazy returns. So maybe I'll take this kind of a risk. But I agree कि किसी भी algo के लिए नेट इक्विटी कर्व सही रहना बहुत जरूरी है। और जो algos अभी हमारे पास हैं, जो algos हम लोग अभी इंटरनली रिसर्च टीम के साथ में, डेवलपमेंट टीम के साथ में चल रहे हैं, दे आर मच बेटर, बिलीव मी, दे आर मच मच बेटर द इक्विटी कर्व। अगेन कोई फायदा नहीं है मैं बोलूं या फिर हम लोग प्लेटफॉर्म पे डालें, हम लोग आपको दिखाएं, टीजर बताएं या फिर ट्रेलर दिखाएं,
कोई फायदा नहीं है अगर हम लोग जल्दी इसको मार्केट में नहीं ले आ पाए, क्योंकि मैं कितना भी आल्गोस प्लेटफॉर्म पे हम लोग पब्लिश कर दें, इफ यू कांट ब्रिंग इट, हम लोग लाइव नहीं ले जा पाएंगे जल्दी, तो क्या फायदा। इसलिए हम लोग प्लेटफॉर्म पे वो अपडेट नहीं कर रहे हैं। बट वी विल सी, हम लोग होपफुल हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग रिलीज कर पाए, बट वी विल लेट यू नो। सुनील सुनील कुमार जी। Yeah, hi sir, good evening. हाय सुनील। Yeah, actually, I was also an Android developer, sir. I myself created an algo using candlestick pattern for a strategy using Intraday API. But actually, the thing is, I was more invested in a strategy which has a good risk reward kind of thing, sir. So I couldn't able to find one. So I just stopped whatever I have created. I had the base code, whatever strategy I had, I could include. But so I have gone through YouTube and I have seen your video, this one. So, sir, I just want to understand, is this your strategy works on risk reward basis or how it is, sir? Like, do you have any risk reward in mind, like 1:2 or 1:1, or how it is like? Because I myself think like if you have 50% accuracy with 1:2, that would be a profitable one at the end of the day. So how this algo works, sir? Yeah. Oh, well, the thinking process of having 1:2, 1:3 is actually good. It is not wrong. I'm not against it. But then our idea of strategies are entirely different. If you've been following our platform, you will understand, Sunil, that we are not people who would look at, first of all, we don't look at candlestick patterns. We don't subscribe to the ideas, traditional ideas of having a strict stop loss or a stop loss at at 20 points, 15 points, and then take profit at 50 points, etc., etc. Our trading, none of our videos would actually talk about trading strategy like that. For us, it is always about volume. Let volume tell me to take an order. Let volume tell me to exit an order. Let volume tell me to exit at a stop loss or a loss or a profit. Doesn't matter. We don't even look at how much profit or loss. It is purely driven by volume. So none of these algos that you see have a strict stop loss. But because regulation mandates it, so we are adding a stop loss of 50% or some crazy like that. Okay. So we will add some 40-50% kind of a stop loss, but none of them have stop losses. The idea is to be able to read volume and let volume tell you if the momentum is there, and if it can carry you to 200 points, we will continue. We will not let it kill. But if the momentum is not there, and if it tells us to exit in the next candle, for example, we'll happily exit. So this does not subscribe to the standard ideas of 1:1, 1:2, or anything like that. Understood, sir. And moreover, you would also understand. You would also see that, I think, I don't know if we have any of them here. See the ratio. Just look at the ratio. Right? Even if it is 1:2, it will fail. Right? Even if you have 1:2, it would still fail. But look at the returns. There's no way that 369 profitable trades and 763 loss-making trades with even 1:2 or 1:3 also would give you this kind of a return. Correct. Yeah. Sir, but the problem is for the target is fine, but while executing the stop loss, as the code need to execute, sir, there could be a slippage. No, if you're not executing in a market order, if you're provoking for the limit order, there would be a slippage always, and our loss would be increasing, right? Yeah. So couple of challenges. We never planned for limit orders, but unfortunately, we will have to if you are going with Algo, because that's the regulation, right? If we are providing algos, we have to place limit orders. Otherwise, the order will get rejected. NSA will simply reject it. The moment we tag it with an ID and we say this is an algo, it will get rejected. But then you are right. We plan to release them with market orders. But if the market orders are not there, we'll have to rework all of them from limit orders and some kind of a slippage. We have not factored that in this yet. But the moment we agree that it has to be a limit order, we will work out on how the slippage has to be, and based on that, we will work it out. Why is this, sir? Like for companies or for For anybody.
if you are providing an algo, you cannot execute a market order. Period. That's But the regulation. okay. But for individuals, yeah, we can develop If according it's to your the own, API. if it's your Yes, own, sir. there is no such limit. No such thing. Yeah, fine, understood. Yeah, and sir, all these algos are option buying algos only. We have option selling also. I'll ask the team to publish them, but again, of no use if we can't release them soon. I'll ask the team to publish them. Let's see that by weekend I'll ask them to publish them. Even these also change. What you see on the screen also they are Yes, changing sir. them. Yeah, We are more or less taking these out. correct. Sometime back, I saw there are a lot of algo names, but I guess now it has been decreased. Correct. You have reduced some of the things here. These Yeah, has what you see also we have taken out because of the kind of drawdowns are there. Most likely we will okay. remove all of them and publish a few. I think what we are the one that we have, the ones that I like are mostly sellers point of view. Even buyers also we have good ones, but buyers have more drawdown compared to the selling algos. But I'll ask the team to publish a few new ones. No problem. Correct. And and per day, as of your back test or something, in a day, how many trades it would execute, sir? Like, You can calculate it, right? 1 year, 1,000. th- that's what I'm asking. On Like, an this average, 1132 is for a year, sir. one entire year, correct? One entire year. Okay, then that goes something. Okay, okay. Five Somewhere on an around average, 5 trades a day, five, five six trades trades a a day, day. five, Yes, six trades yes, a day on an average. Yeah. correct. And yeah, sir. And I'm new to this trading and all. What do you suggest, sir? Shall I go for option selling or option buying? Like, I was more of a conservative guy. Yeah. It all depends on your Mm. style, Risk. Sunil. Yeah, If you're stability. relying on candlestick patterns, and based on that, if you are doing, are you asking me from trading point of view or algo point of view? No, algo point of view. As I was a kind of conservative guy. Okay. Sell, be a seller, be a seller. Seller. Correct. Correct. You'll get much better Fine, sir. graphs. Fine, fine. And the thing is, like, sir, I'll just when you even publish the algo, you'll deploy the algo to live. Maybe I would check for 1 or 2 months how the performance and all. Maybe I kindly Sir, can request you to publish the live. Maybe once the month end, kindly publish the results also, sir. Will do. Month Will wise, do. if it is possible. Yeah. Of course. Yeah. Yes, yes. Maybe then I could actually take a decision. Like if it is yeah okay for me, I could capable of taking this drawdown and all. Yeah, No problem. because the back testing, forward live testing is much more different than the back test, no, sir. Yeah, that's what. So yeah, understood. Fair enough. We'll publish the results. Sure. जसदीप भाई आप कुछ बोल रहे थे? Sir, I just wanted to ask you, the question he asked was if as a conservative point of view, you should do more into selling and buying or buying in algo. You said something. I did No. not get the answer. I said आप selling कीजिए, buying मत कीजिए, क्योंकि your risk appetite is less. As a buyer आपको definitely risk appetite बहुत ज्यादा होगा capital के point of view से. आपके यहीं पे दिखेंगे हम लोग कुछ सेलर के algos भी यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे. आप इक्विटी कर्व देखिए, आपको समझ में आ जाएगा. जो सेलर algos है वो इक्विटी कर्व बहुत ही अच्छा रहता है. जो बायर है उसका इक्विटी कर्व थोड़ा खराब रहता ही रहता है. कुछ भी करो उसका इक्विटी कर्व इतना अच्छा नहीं रहता. तो अगर आप कंजर्वेटिव रहना चाहते हैं तो सेलर इज बेस्ट. Perfect, sir. Perfect. Thank you. नो प्रॉब्लम. एजे अजय भाई. हेलो. ये जो निफ्टी जो क्या चार्ट है कैंडल का, वॉल्यूम हाँ. कैंडल का, हाँ नहीं निफ्टी बोलिए. का जो चार्ट दिखाते हैं आप, मार्कर्स वगैरह, हाँ यही वाला ना. उसमें जो हाँ मार्कर्स का जो निफ्टी का जो स्पॉट का चार्ट दिखाते हैं, करेक्ट. उसमें क्लोजिंग प्राइस आपने बताता है कि आने वाला है, अभी अपडेट नहीं हुआ. नहीं हुआ है यार, सॉरी. हम लोग क्योंकि आपस के बीच में इतने बिजी थे. 1 मिनट में अभी दोबारा से लिख लेता हूँ सो दैट मैं टीम को बता पाऊँ. 1 मिनट रुको भाई.
हाँ भाई डन, मैं बता दूंगा टीम को। और सेलिंग का जो आल्गो आने वाला है उसमें कितना रहेगा कैपिटल रिक्वायर्ड? जो अल्गो बोल रहे हो उस पे, वो हाँ, सेलिंग के सेलिंग लिए का। शायद बहुत ज्यादा रहेगा यार। सेलिंग जब हम लोग अभी फिलहाल जो सेलिंग देख रहे हैं उसमें हेडजिंग नहीं है, नेकेड सेल्स है। तो अगर नेकेड सेल्स की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली 2 लाख तो मान के चलो, 2 लाख 2.25 लाख एक लॉट का, और कम से कम 5 लॉट, तो 10-12 लाख का तो मिनिमम कैपिटल रहेगा सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज अगर कैपिटल, अगर लॉट कम करोगे ना, तो प्रॉब्लम क्या है कि हम्म, ब्रोकरेज में ज्यादा पैसा चला जाता है। एंड अगर लॉट बहुत ज्यादा करते हैं तो भी कैपिटल बहुत ज्यादा, 20 लॉट तक जा ही सकते हैं वैसे एक ऑर्डर के अंदर, सबको पता है लिमिट्स क्या है। तो सेलिंग के लिए कैपिटल ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा। सेलिंग के लिए इक्विटी कर्व बहुत अच्छा है, वो एक इंपॉर्टेंट है। वीकेंड में अगर हो सके तो सेलिंग का हेजिंग नहीं रहेगा, ऐसा बोल रहे हैं क्या, बता रहे क्या? सेलिंग में सर, हेजिंग नहीं रहेगा, हेज नहीं हेडजिंग हम रहेगा लोग ना नहीं कर सेलिंग रहे हैं, का? क्योंकि हेडजिंग में क्या हो रहा है ना कि जब हेड्ज करके कर रहे हैं ना, तो जो रिटर्न्स है वो इतने अच्छे नहीं है। रिटर्न से ज्यादा जो इक्विटी कर्व है वो हम लोगों को पसंद नहीं आया है। तो इसलिए हमने कहा यार क्यों, मतलब एंड ऑफ द डे रेवेन्यू तो उतना ही है, तो फिर रेवेन्यू इनफैक्ट कम हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे निफ्टी का याद है, हम लोग 10 लॉट्स का कैलकुलेट करके रखे थे शायद रिसेंटली, मैंने जो मुझे याद है, अगर एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का एटीएम स्ट्राइक पे उन्होंने देखा था तो कुछ 15-20 लाख का, 15 से 18 लाख का कुछ रिटर्न था 10 लॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो हेड्ज करते हैं तो ऑब्वियसली कम हो जाता है, 9 लाख 8 लाख समथिंग लाइक दैट, बट प्रॉब्लम था इक्विटी कर्व बहुत खराब था। तो हमने कहा कि अगर 15-20 लाख का अगर नेट रिटर्न है, नेट रिटर्न है, तो परसेंटेज देखने की बजाय हम लोग ये देखेंगे ना कि कितना रिटर्न आया है। आई थिंक दैट वुड मैटर द मोस्ट। एंड मोर ओवर इक्विटी कर्व अगर कम है ना, तो वो रिस्क नहीं रहता है यार। सुबह उठ के हम लोग देखेंगे कि 10% इक्विटी कर्व नीचे चला गया ना, वो टेंशन नहीं रहता किसी को भी। तो परसेंटेज वाइज अगर थोड़ा कम भी आ गया ना, तो कम से कम स्मूथ इक्विटी कर्व रहा तो अच्छा है। इसीलिए हम लोगों ने वो हेड्ज का निकाल दिया। बट शायद पता नहीं, इवेंचुअली हेड्जिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी शायद कर दें, पता नहीं, आई डोंट नो। ओके। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? और हाँ ठीक है। ये हेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी निकलेगा, लेकिन वो कितना कैपिटल रहेगा हेजिंग के साथ वो उसका? पता नहीं, अभी फिलहाल तो हेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मैंने तो नहीं देखा है, तो मैं कह भी नहीं सकता अनफॉर्चुनेटली। अब उतना ही रहेगा, आपको पता ही यार, 80,000 मान के चलो, बेस्ट वर्स्ट केस सिनारियो 80,000 भी अगर मान लिया आप, 85,000 भी अगर आप एक लॉट का मान लिया, 1 लाख भी मान लिया एक लॉट का, 5 लॉट मतलब 5 लाख हो जाएगा। ओके ओके। सेफर साइड अगर 1 और लाख भी जो मानते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं लगता है। मिनिमम 5 लॉट्स रहेगा वही वही? 5 अगर नहीं करते हैं ना, तो ब्रोकरेज में बहुत ज्यादा पैसा चला जाता है यार। ओके ओके। सोचो और 50-60 बाइंग के लिए 1 रुपया। बोलो। बता रहे हैं? क्या होता है ना कि एक अगर आप एग्जीक्यूट करते हो, सिर्फ ब्रोकरेज जाता है कम से कम 50 रुपया मान के चलो, जीएसटी को हाँ लगा कर। बराबर। और अभी लॉट का सेस तो हम्म, 65 है, मतलब 1 रुपया कम से कम प्रॉफिट ब्रोकरेज को देना पड़ता है। ओके वही ओके। अगर आप 5 लॉट कर लेते हो ना, तो आपको 20 पैसे का ऐसा कुछ पड़ता है। तो मायने रखता है, उतना फर्क पड़ता है उन सब चीजों से। ओके ओके। और बाइंग के लिए फिक्स है क्या अभी जो दिखा रहे हो, ये उसमें नहीं, चेंज होगा? ये भी चेंज हो रहा है। ये शायद आउट ऑफ द मनी के रिलेटेड थे, इक्विटी कर्व्स इतने ग्रेट नहीं है अभी। जो नए स्ट्रेटेजीज हम लोग पब्लिश करेंगे वो सारे इन द मनी के हैं शायद। एंड आई थिंक 30-35,000 पर सेफ कैपिटल मान के भी अगर चलोगे ना, तो 25 से 30 हजार रुपया पर लॉट के हिसाब से है, सेफ अगर मान के चलते हैं ऐसे? तो। और शायद 350 पे कैप है, मतलब 350 के ऊपर वो बाई नहीं करता है, और समथिंग लाइक दैट। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। हम लोग पब्लिश करेंगे तो आपको बता देंगे, यहाँ पर वो सारे डाल देंगे कि बाई में अगर तो प्रीमियम 350 से ज्यादा है तो वो बाई नहीं करता है, वो रुक जाता है। उसका कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना रहेगा उसका फिर? 5 लॉट मान के चलो, और क्या, 30,000 5 लॉट, हाँ 1.5 lakhs। ओके ओके। ओ, मिनिमम 1.5 लाख तो भी रहेगा उसमें? हाँ 5 लॉट रहेगा तो। अभी ये 75 का ये नहीं रहेगा? ये अल्गोस पता नहीं हम 75,000? रखेंगे कि नहीं रखेंगे, क्योंकि इक्विटी हम लोग, अगेन सेम प्रॉब्लम है, इक्विटी कर्व को देख के चलना पड़ेगा। दैट ओके इज द ओके। इम्पोर्टेंट थिंग। पता नहीं रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। इम्पोर्टेंट अजय भाई सच बताऊं तो, ये 75 वाला रख पाएंगे या 1 लाख वाला रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, इन सबसे ज्यादा मेरे लिए
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कितनी जल्दी लाइव जा पाएंगे। जेन्युइनली कह रहा हूँ, जिस दिन लाइव ओके जाएंगे उस दिन आप हम दोबारा कॉल करेंगे, उस दिन आप बता दीजिएगा मतलब किस तरह के आल्गोस कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड अगर है तो मैं टीम को बताकर उस तरह से मैं चेंज करवा सकता हूँ। लेकिन पहले हमें लाइव जाना इंपॉर्टेंट है। एक स्टार्टअप के लिए अभी फिलहाल तो मुश्किल ही है कि ये सभी नेविगेट करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है एक एक यंग स्टार्टअप के लिए। तो हम लोग ये सब नेविगेट करने के बाद ही आपको बताएंगे। लाइक आई सेड, हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग रेगुलेशंस के अगेंस्ट कुछ करें, या फिर हम लोग जो भी रूल्स हैं हम उनके साथ ही चलें। तो पता नहीं, देखेंगे, हाँ, बताएंगे आप। जब भी लाइव जाएंगे तभी आप बता देंगे कि इतना मिनिमम कैपिटल से हम आप कर हम सकते हैं आल्गो ऐसा। बता देंगे आपको। हाँ, वो आल्गो रजिस्टर हो जाएगा जब भी लाइव जाएंगे ना, आल्गो एनएससी के साथ रजिस्टर हो जाएगा। वो आल्गो एनएससी में भी पता रहेगा। अब वही आल्गो का हम लोग इमिडिएटली बता पाएंगे कि एग्जैक्ट कैपिटल कितना रहेगा बोलकर। इसमें सारे यानी वो डिटेल्स डिस्प्ले होगा कि आपको पूछना पड़ेगा तभी इतना नहीं नहीं, लॉट सभी से आपको करना है, यहीं इतने पे मिल कैपिटल जाएगा। से। जब आप सब्सक्राइब ये पे करेंगे ये वो पे डिस्प्ले हो सब्सक्रिप्शन। जाएगा कि इतने कैपिटल से मिनिमम हो सकता है ऐसा। करेक्ट, यहीं पे मिल जाएगा सारा ओके डिटेल उसी पेज में। जब आप सब्सक्राइब करेंगे वहां पर आपको बहुत सारी चीजों का डिटेल भी, विषय मतलब पूरा विश्लेषण भी मिलेगा कि आपको क्या ध्यान में रखना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या आप लॉग इन करते हो तो क्या होता है, आप लॉग इन नहीं करते हो तो क्या होता है, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। यानी जितना आप डिस्प्ले करेंगे उतना तो रखना ही पड़ेगा ऐसा बता रखना रहे ही हैं। पड़ेगा, करेक्ट करेक्ट। उससे मिनिमम नहीं होगा फिर। उससे मिनिमम नहीं होगा, करेक्ट। हाँ, ठीक है ओके। और आपको सब्सक्राइब करने से पहले ही पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सब्सक्राइब कर दिया, पैसे पे कर दिए, उसके बाद में आपको पता चल रहा है कि कैपिटल इतना है। आपको पता है, हम लोग मतलब ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो आपको पहले ही बता दिया जाएगा जो भी है। ओके सर। और ये ड्रॉ डाउन भी चेंज होगा ना इसमें अभी, ड्रॉ डाउन। ये बहुत ही बेहतर होने वाला है। मैं शायद वीकेंड में अगर डिप्लॉय कर देते हैं तो आपको बता देंगे। आप देख लीजिएगा वेबसाइट पे मंडे के दिन अगर कुछ नया आता है तो मैं टीम को बता दूंगा। अगर वीकेंड में डिप्लॉय कर सकते हैं तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे स्ट्रेटेजीज हैं। ज्यादा ना सही, कुछ कुछ तो ऑलमोस्ट मैं उनको अपडेट करने के लिए कह दूंगा। आप देख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। बाइंग और सेलिंग दोनों आ जाएगा वीकेंड तक दोनों ऐसा बोल रहेंगे, रहे हैं क्या? दोनों रहेंगे, दोनों रहेंगे, हाँ। और लाइव जाने के बाद तो उसमें और चेंजेस हो गए अभी नहीं होगी? लाइव जाने के बाद भी चेंजेस होंगे, लेकिन रेगुलेशंस के हिसाब से लाइव जाने के बाद में हम जो भी चेंजेस करते हैं वो फिर से एनएससी को बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद ही हम लोगों को लाइव में भी चेंजेस कर सकते हैं मतलब। तो वो सारे रूल्स हैं। तो कितना कर पाएंगे लाइव में चेंजेस, कितना नहीं कर पाएंगे, वो सबको इंटीमेट ही किया जाएगा। आपको ये भी ऑप्शन मिलेगा मोस्ट लाइकली कि अगर हम लोग वर्जन 1 पे हैं और वर्जन 1.1 में कुछ चेंजेस हैं तो आपको दिखेगा क्या चेंज है, उससे कितना फर्क पड़ रहा है, और क्या आप 1 में रहना चाहते हैं या 1.1 में रहना चाहते हैं, वो भी आपको मतलब वो ऑप्शन आपको दिया जाएगा। क्योंकि अभी एनएससी इन सब चीजों को लेके चल रहा है, तो हम लोगों को भी उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ठीक है। हम्म, ठीक है। विश्वास। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ क्या? ये पहला क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि उसके पीछे बहुत सारी बैक टेस्ट वगैरह करना पड़ता है, आप कैसे ट्रस्ट करोगे वो चीज, मेरा क्यूरियोसिटी था, मैंने आपको पूछा। लेकिन वो बेस्ट स्ट्रैटेजी मैंने ही आइडेंटिफाई किया था, बस उतना ही। दूसरा ये क्वेश्चन है कि सर, आल्गो में एक प्रॉब्लम ये रहेगा ना कि ट्रेंड मिला तो ठीक है, लेकिन साइडवेज मिला तो बहुत बार एंट्री बहुत बार एग्जिट कर करके बाद में वो थोड़ा लॉसेस होता है ना। तो आपने उसके लिए भी प्लान किया होगा, आपने कैसे प्लान किया साइडवेज के लिए आल्गो का, मैं वो पूछ रहा है। मैं भी आपको बताता हूँ, रुकिए। मैंने इसीलिए आपको यहाँ पे निकाल दिया, शेयरिंग निकाल दिया, क्योंकि अब जब मैं नए एल्गोस डिप्लॉय होंगे तब भी आप ये चीज देख लीजिएगा। तो इसको छोटा करते हैं। मैं अभी रिसेंटली किसी से बात कर रहा था तो मैं उनको यही दिखा रहा था। ये निफ्टी है, ठीक है। आप देख रहे हैं ना विश्वास जी? सर मैं देख रहा हूँ। आप विश्वास जी, आप कर्नाटक से हैं बाय एनी चांस? हाँ, कर्नाटक से। एक्चुअली मैं कन्नड़ में बात किया तो ये लोग बाकी लोग नहीं समझेगा ना, तो इसलिए मैंने हिंदी में बात किया सर। ಪರವಾಗಿಲ್ಲ। तो विश्वास जी, ಇದು सॉरी, सो आप यू सी दिस, ओके। निफ्टी कैसे पूरे एक ओके। साल में किस तरह से काम किया है आपको दिख रहा है निफ्टी। आपको ये कर्व अच्छा। देखना है।
जब नए algos डिप्लॉय करेंगे तब देख लीजिएगा कि ये कर्व कैसे काम कर रहा है। जब मार्केट नीचे जा रहा है तो काम कर रहा है, ऊपर जा रहा है तो काम कर रहा है। जब मार्केट पूरा साइडवेज में था, जैसे मई से लेके थोड़ा ऑब्वियसली मोमेंटम बीच में आया लेकिन ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ। मई से फॉर एग्जांपल जून में तो कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद में लगभग जुलाई से लेके सितंबर तक, सितंबर अक्टूबर तक कुछ नहीं हुआ, राइट। सो अप्रैल मई, हाँ मई से क्या हुआ, थोड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ आया। जुलाई से सितंबर तक क्या हुआ, डाउन था, मतलब सितंबर अक्टूबर में कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं हुआ है। जो नए algos में आपको डिप्लॉय करके हम लोग ये करेंगे ना, उसमें आपको यही देखना है कि निफ्टी क्या हुआ है, एक साल में निफ्टी क्या हुआ है। जब नीचे गया है तो ये algo क्या कर रहा था, जो ऊपर गया है तो ये algo क्या कर रहा था, वही आपको। जब फॉर एग्जांपल ये पूरा नीचे चला गया अप्रैल में, तो क्या अप्रैल में इतना ज्यादा ड्रॉडाउन है? अप्रैल में दिख नहीं रहा है, बहुत ज्यादा ड्रॉडाउन तो दिख नहीं रहा है अप्रैल में। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट अचानक क्रैश हो गया तो क्या होगा। ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಹೊಸ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ वीकेंड ಅಲ್ಲಿ अपलोड ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೊಸ algos ಎಲ್ಲ। बट प्लीज टेक अ लुक, आप वीकेंड में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया ना विश्वास जी? हाँ समझ में आया सर। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आल्गो हो गया है ना? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ಇದು ಯಾವುದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, 1 year ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು। सबको आपको 1 साल मान के ही चलना पड़ेगा। आप तो एक आपका एक आल्गो सर, अभी अभी आपका आल्गो कोई इक्विटी का मतलब सॉरी लॉन्ग टर्म ऑप्शंस छोड़ के ये करता है क्या, क्या बोलते हैं, निफ्टी का ऑप्शन कॉल पुट का आल्गो? ಇದು ನಿಫ್ಟಿ, ಅದು ಕಾಲ್ ಪುಟ್ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಫ್ಟಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಫ್ಟಿ ಕಾಲ್ Okay. ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗ್ತಿರೋದು. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳ ತರ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಇದನ್ನ 1 ವರ್ಷ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಾವು ಕಮಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 1 year ಕಮಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಐಡಿಯಲಿ ನೀವು 1 year ಕಮಿಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಒಳ್ಳೇದದು ಆ ತರ ರಿಟರ್ನ್ ಇದ್ರೆ. ನಿಮ್ಗೆ 1 year ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ 1 year ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗೋದು. बिकॉज मध्यದಲ್ಲಿ ड्रॉ डाउन ಬಂದ್ಮೇಲೆ, ನೀವು ड्रॉ डाउन ಬಂದಾಗ एग्जिट ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಂತ. तो मैं इनको यही कह रहा था कि अगर आप ये लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू, ये ऑप्शंस ही है, निफ्टी के ऑप्शंस के ही बाई सेल है। अगर आप इनको शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये काम नहीं करेगा। इनफैक्ट अगर आप खुद भी ट्रेडर हो, 3 महीने के रिजल्ट पे आप क्या ही अपने आप को मतलब असेस करोगे। आपको तो 1 साल का रिटर्न परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा आपका खुद का। एंड आल्गो का भी सेम ही है, आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि ये लॉन्ग टर्म है, 1 साल उसको डिप्लॉय करो और देखो कि 1 साल में ये कितना परफॉर्म कर रहा है। एंड ऑफ द ईयर आपको असेस करना पड़ेगा, लेकिन आपको मैक्सिमम रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आल्गो है और आपका, मैं अगर कह रहा हूँ कि 1 लाख का कैपिटल है, अगर वो कैपिटल 50,000 हो जाता है या 40,000 हो जाता है तो देन यू विल नॉट टेक एनी मोर रिस्क, यू विल एग्जिट। तो आप उस तरह से सोच सकते हो कि भाई अगर 1 लाख का कैपिटल है, वो अगर 50,000 हो रहा है तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। मेरा लिमिट है कि मैं 50% से ज्यादा ड्रॉडाउन नहीं ले सकता हूँ। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच के डिसीजन ले सकते हो कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन में इतना लूंगा, इससे ज्यादा नहीं ले पाऊंगा बोलकर। और देखो कि उतना ड्रॉडाउन उस आल्गो में है या नहीं है, और क्या आपके स्टाइल के हिसाब से ये आल्गो चलता है कि नहीं चलता है। अगर नहीं चलता है तो आप उसको सब्सक्राइब मत कीजिए। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವರೇ? ಸರ್ ಹಾ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನಿಮಗೆ? ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅವರೇ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ, ಶ್ರೀನಿಧಿ ನಂಬರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ? ಹೌದು, ಆ ಕಂಪನಿ ನಂಬರ್ಗೆ ಮಾಡಿ. ಅದು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಬಟ್ ಅದು ಕಂಪನಿ ನಂಬರ್, ಅದು ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಸರಿ, ಓಕೆ ಒಂದು ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹಾ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಶ್ವಾಸ್. ಹಾ, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ಇದು ಬ್ರೋಕರ್ ಯಾರನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದು मोस्ट लाइकली नाउ वी थॉट, हम लोग ब्रोकर हम लोग सोच रहे थे 5 years या देन दोनों में से कोई एक एटलीस्ट begin। अभी पता नहीं है अभी, क्योंकि ये सारे रेगुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नहीं पता है। शायद 1-2 ब्रोकर हम लोग चूज कर ही दे ऐसे ही बिटवीन 5 क्या है years। सर, कुछ ब्रोकर से सर वो ऑप्शन ट्रेडिंग में चार्जेस बहुत कम करता है, चार्जेस वेरी कम है, मतलब उसका कंपेयर किया तो एग्जांपल सही और उसका एग्जीक्यूशन फास्ट है, लेकिन और आईसीआईसी का भी कम है उसका। अगर 10,000 रुपए एक आदमी का पे किया तो 7 रुपए पर ट्रेड का पड़ता है आईसीआईसी का।
ऑफ कोर्स इट्स मैटर्स एग्जीक्यूशन कैसे कितना फास्ट होता है क्या क्वालिटी है उसका वो ऑफ कोर्स मैटर करता है ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅವರೇ सॉरी क्या होता है ना कि इम्पोर्टेंट अगर हम लोग कोई मैं अगर मान लो कि हम हमारी तरफ से हमने कोई वेंडर को 5 पैसा हमने मान लिया सेलेक्ट किया अगर 5 पैसा का ऑनबोर्डिंग सही नहीं है आपके पास 5 पैसा का अकाउंट नहीं है और आप 5 पैसा अकाउंट क्रिएट कर रहे हो और अकाउंट क्रिएट करते करते आपको 3-4 दिन लग गया ऑनबोर्डिंग में आपको फिजिकली पेपर साइन करके कोरियर करना है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस खराब है तो आप लोग क्या करोगे आप लोग हमारे पास आओगे बोलोगे ये 5 पैसा पे ऑनबोर्डिंग ही नहीं हो रहा है तो हम लोगों को सिर्फ ये नहीं देख सकते हैं कि उनका ब्रोकरेज कैसा है हम लोग को देखना पड़ेगा कि उनका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कैसा है उनका चार्जेस कैसे हैं उनका टेक्नोलॉजी सिस्टम कैसा है ये सारे देखकर ही हमको डिसाइड करना पड़ेगा तो हम लोग सोच रहे थे कुछ अभी फिलहाल तो कुछ नहीं पता हम लोग सोच रहे थे 5 years या डन समथिंग लाइक दैट बट आई डोंट नो अभी तो नहीं पता है हम लोग देख आई थिंक टॉप टायर में से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे अगर लाइव होता है तो शायद जीरोधा आई डोंट नो अपस्टॉक जीरोधा ग्रो आई डोंट नो एंजल वन समथिंग लाइक दैट देखना पड़ेगा ओके सर हाँ थैंक यू सर थैंक यू विश्वास रंगनाथ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವಾಗ ಇದೇನು ಆಲ್ಗೋ ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಡ್ರಾಡೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ 95% ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಇದೆ ಇದು ಇದೇ ತರ ಇದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 11,000 ಬಂದಿದೆ ಅದು ಓಕೆ ಹಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಹಾ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಸೆಟಪ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪೀಕ್ ಇಂದ ಅದು ಲೋ ಆದಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಎರಡನೇದೇನಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಬರೀ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಸೆಲ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಹಾ ಜಸ್ದೀಪ್ ಭಾಯ್ 1 ಮಿನಿಟ್ रुकिए ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸೆಲ್ ಸೈಡ್ ಒಳ್ಳೇದು ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಆಲ್ಗೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಬೈಯಲ್ಲೂ ಇದಾವೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಆಲ್ಗೋಸ್ ಇದಾವೆ ಬೈಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಬಟ್ ಬಯರ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಲ್ಗೋಸ್ ಇದೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕಪ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸೆಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನನ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೆಡ್ಜ್ಗೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹೆಡ್ಜ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಓಕೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡಬಲ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು 1000ದಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 2,200 ಹಂಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬೈ ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ದ ಬೈ ಸೈಡ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇದು ಏನದು ಹೆಡ್ಜ್ ತರ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಲೈಕ್ 2 ರೂಪಿ 3 ರೂಪಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾರ್ಜಿನ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೆಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಈಗ ಹೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು 100 ರೂಪೀಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು 50 ರೂಪೀಸ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಂದು ಆತರ ಎಲ್ಲ 100 ರೂಪೀಸ್ ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಬೈ ಇಟ್ ಫಾರ್ 5 ರೂಪಿ ಆರ್ 3 ರೂಪಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸೊ ಐ ಬಿ ನಾಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಇದೇನು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರು 1 ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗೋದು ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 50 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕರ್ವ್ ಹಾಳಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ವ್ಯೂ ಏನಾದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೋಡೋರ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಪೀಪಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಏನೋ ವೆದರ್ ವಿತ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ವಿತೌಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಈಗ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಸಿದ್ದೆ ನನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟೈಮು ಆಫ್ಟರ್ 1 minute 5 seconds to 8 seconds ಒಳಗಡೆ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿಬಡಿ somebody had an issue I think today somebody messaged and the team was looking into it if you have any issue in the platform please message us on WhatsApp because we do not like our subscribers having any issues so we'll definitely address it
Sure. Okay. Sir, earlier we were allowed to use 3, 4 or 5 screens on the same IP address. Like you remember, you said that you use in the same computer you can open into 3, 4, 5 अभी भी कर सकते हो. screens. नहीं सर, वो सेकंड स्क्रीन जैसे खोलते हो आप, पहली स्क्रीन शट ऑफ हो जाती है सर. नहीं, मैं यहाँ पे अभी दोनों चल रहा हूँ ना, ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है, दोनों चल रहा है मेरे. देखिए नहीं सर, जैसे आपने ये अभी खोला ना, अगर आप हाँ. थर्ड या फोर्थ खोलोगे तो ये ऑटोमेटिकली एक ही कंप्यूटर में बंद होती रहती है. नहीं, It was very easy to do that when you had multiple options to see नहीं, the sheets. मैं 10 स्क्रीन ओपन करके रखता हूँ, कुछ नहीं होगा इसमें, वो प्रॉब्लम ही नहीं. पता नहीं सर, मेरे वाले उसमें बार बार हो रहा है. मैं यहाँ पे देखो Issue. 600 कर दिया हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे 700 वैसे ही है. यहाँ पर मैं टाइम चेंज करता हूँ, देखो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है. वो अभी ये स्क्रीन वैसे ही काम कर रहा है, ये भी क्लिक करता हूँ, ये भी. I'll do one thing. I'll retest my screen once again and I'll send the screenshot to Sridhi sir. हाँ, वो व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा. मैं WhatsApp पे नहीं हूँ, I'll send it to him sir. Don't worry. करेक्ट. Thank you sir. Thank you very much. कोई लिमिटेशंस नहीं है अभी भी. एक कंप्यूटर में आप कितने भी स्क्रीन ओपन कर सकते हैं, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है. हाँ, एनी अदर क्वेश्चंस? Sir, Sunil here. Actually, I have seen your 915 trade 2 days back, 1 day back only, the website. What does it really offer, sir? Just confused. I guess people are using your website. Can you just give me a quick heads up or something? I would recommend you look at some of the videos, recent videos. You please look at them, because I don't think I'll be able to give you a complete brain dump now. So essentially, it's a platform dedicated for volume. Okay. We do not look at candles. We don't do anything with price. We don't look at candlestick patterns. We don't do anything with price. Even the markers that are displayed on the candles, the markers are derived with volume. They are not price based. Understood that. Okay. So I strongly recommend you watch some of the videos. I'll check it out. Yeah. All right. Any questions? Anyone? Any language? Languages I can speak, of course. किसी को और कोई सवाल है? हाँ, गोपाल कृष्ण. Yeah, just one question. Instead of graphs, can you give us the feed of numerical values in Excel sheet on live, like many other websites provide? These particular 4 values, is it possible to even by subscription, so that anybody can develop his own individual algo using the data? Oh, like that. Yeah, understood. It's a good idea. I'll think about it and I'll pass it on to the team. We'll ask the team. Do you have any website that does this so that we can refer? Actually, I can access the live data from Zerodha or any website. There are a lot of algos available, Python codes available to fetch the data, right? So we fetch the data and use some logic to take some decision. But this is entirely different kind of data, so we can use this one also. Understood. Maybe some APIs we could expose. We'll definitely think about it. I'll ask the team. I will update the team. And you can charge whatever you feel is good. Yeah. Correct. Yeah. Thank you. No problem. Thanks. Any other questions? Anyone? I have nothing to explain. I was not prepared to explain anything. So unless you have any questions, I won't be able to, answer anything. One day I think, sir, how to connect personally, Sunilji can't. Difficult. It becomes very difficult to manage. My time is so horribly spread. It becomes very difficult. Send us message in Discord. In the Discord group itself, we can send messages. I'm mostly active on Discord unless I'm not well or something like that, and I'm happy to answer to you on Discord.
Just Jasdeep Bhai, I think I've answered your question. You can open multiple screens. There is no limit as such. Kailash ji, you have any question? In the meanwhile, anyone has any question, you can unmute and you can ask. Hi, sir. Kailash. What is the trigger point to take enter into the trade, sir? You are a Because buyer? there are many times I end up with false breakouts. That is why I'm asking this question. So Kailash, are you a buyer or a seller? Buyer. If you are a buyer, and I keep saying, if you are a buyer, please rely on volume candles. That is, believe me, there's nothing that is as easy as this. Get used to it. Get used to looking at volume candles and get used to using volume candles. I'll take today's example. Again, I was not in market, but I can tell you that 25,850 would have given an indication, a strong indication. Okay, let's look at that. A sell pressure for reversal can only come from 850, correct? That is slowly coming down. So let's look at after 11 o'clock, 25,850. 25,850, open candles. Look at put because you're a buyer. After 11 o'clock, I said, right? After 11 o'clock, if you are looking at it also, at 10:59, there was one signal, but ignore that. Then there were still red candles, but ignore them. One big red candle came at what time? 11:13. You could have taken that and you would have immediately exited. And then you would take this. And that you would have continued again a while, and then again one more trade, and then again one more trade. You would not have got a single trade, but 3-4 trades you would have definitely made enough profit. 25,850. And this is purely based on volume candles. Large volume candle, it means that it is signaling you saying puts are exiting. We have a video also on YouTube. Rely on volume candles. Nothing works like volume candles as a option buyer. Please get used to it. First, you do a paper trial, do back testing, see how it worked in the historical data, see how it works on sideways markets, especially on sideways markets. It saves you significantly. And you can use that volume candle itself as your stop loss. For example, this is a big volume candle, so consider half of it as your stop loss. It did not hit. One more red candle, very good. The moment it goes close to the top of this, you exit. Somewhere about 11:18, you are done. You will wait for another big red candle, this one. Break the top of it. It did not break, although it threatened, but it did not break. And then it breaks here, you come out. Again, you probably take a trade somewhere here. And then while it is going up, slowly it is going back up, ignore it. One more red candle, take a trade, and then you don't have to look back till here at least. Okay, so you will not look at the candles and nothing. Just No by price. seeing this on Only market price, for you are going buy. to buy. Believe me, the market would work like this only. It would have put price would have increased a little bit here, but in reality, put would have only started going. Put price started going up only after 11:12. In reality, Yes. put price started going up only after 11:12. And it did not go up one bit. It went up, came back, again went down, and then went up. You see, price also is acting the same way. You would get stuck if you buy any time before that. Why do you want to do that? It is all shopping for that. Rely on volume candles. Rely on volume candles. They're so good. They're so good. I keep It is saying excellently working in trendy market, sir. But sideways in market consol- also. Even on a sideways market, show me one sideways market when it is consolidating. For example, here itself, right? This period, okay? 10:16 to 11:16, 11:12. 10:16, okay? 10:16. Tell me here, 10:16 till about 11:12. Would you ever buy? Do you have any buy chance here at all? Maybe here a bit, right? And then you're exiting immediately. You're exiting within 2-3 candles. Okay, or you have another opportunity here, but you will want it to break, or you will want them to consolidate a little bit. So even if you take this, it is still a very good opportunity. 10:59. But I'm saying, do you have any buy opportunity from 10:16? no. So how is that you are stuck? It is eliminating the entire, sideways or entire slowdown. I'm telling you, take a sideways market. Take a sideways market. Look at volume candles. They will not give you entries.
There are so many examples we have done on YouTube also. It will not give you entries. What will happen is put is also growing, call is also growing. That is when you have sideways market. When Nifty is sideways, both put and call, they both are growing. That is why the price is stuck in one place. Otherwise, how the price can get stuck? Right? Right. One of them show you sign of weakness. You understand that, okay, most likely this is the guy you can make money with. That is the direction the price will go in. So do observe sideways market also. There are so many sideways markets. We have more than 1 year's data. So you can obviously look at sideways markets also. You will realize that you most likely would get a trade, but 1 or 2 candles you will exit. You will not wait 10-15 minutes. If you are wrong, you will definitely exit in 2 or 3 candles, not more than that. But if you are right, you will wait half an hour and you will make good amount of returns on that. But you will not be wrong like this. You will not be wrong till at least 1042 or 1043. So look at this, till 1043 I'm talking about. Till you will not be able to take any trade till here. Till here. You will never be stuck here. There is no way you can take a trade here. Go on. No, sir. Actually, the problem is I usually go for the breakout trades every day. But So even with breakout trades, combine it with the volume candles. That is what I would say. yes, sir. But what I feel is the red candle was formed after the breakout, so I may feel that I may lose 10 or 15 points at that time. So I'm taking entries before itself. That is why I'm end up with so many false breakouts. So my point is, let's say that, okay, ask yourself this question. Do you want, the fear of missing out is there, of course. Do you want, okay, there are 2 options for you. One, you can capture the entire trade and take 40 points, but then you are wrong most of the time. Or you can capture 30 points. This is not losing like 10-15 points. Your entries are essentially rock bottom itself. Somewhere here itself you got your entry. You understand, you got your entry at 11-12 or something like that. It is still at the bottom. It's not like you have lost significant movement. You understand? Red candles, you would still be at the bottom. Maybe you would lose 5-6 points, not more than that. But the chances are that the moment you take a trade, it will immediately move because of the red candle. You will not get stuck. Yes, sir. So for example, if you look at this also, right? The moment, well, today was bad because it went up and came down and all that. But then the moment you see, for example, this one, red candle, 1226. 25, 26. What happened after 1226? 109. It quickly went to 157. That is the power of liquid, sellers leaving. Yes, sir. It moves quickly. It quickly gives you a momentum. That is the advantage. So rather, even if you've got a breakout, wait for the red candle. Take 20 points instead of 40 points. That is still good, isn't it? Yes, sir. More relaxed, at least you don't have a pressure. Yeah, there are videos, of course. We have done a few videos on volume candles also. So I would strongly recommend you to look at that. Any other questions? With 9 o'clock. I thought there will be more questions on the platform. There have been more questions on the algos, which is good. I'm happy. I just hope that we get to release them as quickly as possible, though. Let's see. So unless there are any questions, I think we can conclude it now. I'll stop the recording. Awesome, done.